Hello viewers, I am Zahoor Islam and you are watching me on my YouTube channel Zahoor Islam Official. Dear students, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिलीवरी के बारे में और जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है उसके एप्लीकेशन के मुतालिक हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ड्रग डिलीवरी, व्हाट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम? सो ड्रग डिलीवरी इज in simple words it is the appropriate administration of drug through various routes in the body for the purpose of improving health. कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि there are different routes of drug administration through which you can administer a drug to the patient through different routes. हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रूट्स है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स जो है वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो अब प्रॉब्लम क्या है? वी विल चूज द अप्रोप्रिएट रूट के फॉर एग्जांपल किस कंडीशन में हमने कौन सा रूट जो है उसको हमने अडॉप्ट करना है, किस रूट के जरिए हमने उस ड्रग को जो है एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। सो द अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू वेरियस रूट्स इन द बॉडी, यानी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या हमारा हमारा जो मेन पर्पस है, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। It is highly interdisciplinary field. It is not a young field. It is recently developed to take into considerations that you can change the drug physico-chemical property. It will be changed the body effect and interactions. हमारा जो main target है कि how these drugs can interact with the biological system. कि how these drug can come in contact with your biological system to improve। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किस तरह ये ड्रग जो है आपके बॉडी के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है और फार्माकोडायनामिक्स है। सो व्हाई वी आर स्टडीइंग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल। ठीक है, तो ड्रग के इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो तरीकाकार है, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द ड्रग इफेक्ट, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए वेल बीइंग, ताकि हमारा मेन जो मकसद है कि ड्रग जो है, द ड्रग कैन रीच टू इट्स टारगेट साइट टू शो सम थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि ड्रग जो है अपने टारगेट साइट पे पहुंच के थेराप्यूटिक इफेक्ट को शो करे। सो पेशेंट कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज वेल बीइंग। There are different methods through which you can deliver a drug to the biological system. So the first one is conventional method and the second one is control. So in conventional method, there are different routes. One is the intral routes, which is the Greek words mean enteron से निकला है। इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद ये है, enteron mean GIT, that the administration of drug into the gastrointestinal tract, that is called intral route. Parental routes mean parental, parental mean beside the intestines, mean the drugs can be given to the patient and the pump of injection, और इसके अलावा और भी रूट्स हैं। फिर कंट्रोल में सस्टेन रिलीज क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज क्या है, साइट स्पेसिफिक क्या है और पल्सटाइल क्या है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस in detail in our previous lectures. These are some application of nanotechnology. So nanotechnology can be applied in different way. मतलब नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसके बहुत से एप्लीकेशन है। टेक्सटाइल में है, केमिकल्स में है, मटेरियल्स में है, फिजिक्स में है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, एनवायरमेंटल साइंसेस में है, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इसके अलावा जो मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स फील्ड है, फार्मेसी में। So it has many applications and it can be mean through the application of nanotechnology, you can produce some new chemical entities. Come toward the nanoparticles for drug delivery system.
Now there are some means we can formulate or we can produce some nanoparticles from some material like metal-based nanoparticles or lipid-based nanoparticles or polymer-based nanoparticles and biological nanoparticles. I mean के जो nanoparticles है, ठीक है, इसके यानी ड्रग डिलीवरी फॉर एग्जांपल ड्रग को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, यानी स्पेसिफिक्स के आपका ड्रग जो है कि अपने स्पेसिफिक साइट पे पहुंच के, ठीक है, टू शो सम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. So metal based nanoparticles, there are different nanoparticles. One is metal based nanoparticles and इसके अलावा lipid based nanoparticles, इसके अलावा polymer based nanoparticle and biological nanoparticles. Nano biopharmaceuticals and biopharmaceuticals, in addition to the main technology, it covered the liposomal, even जो monoclonal antibodies है, antibody based and polymer based technologies, host of new technologies such as nanoparticle, including various nano-dimensional entities such as molecular imprinted polymers, metallo, fullerenes, and prodrug delivery are oral, injectable, and implantable pulmonary, transdermal, and transmucosal delivery have come up. तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप मुख्तलिफ किस्म के, मतलब यू कैन अप्लाई एनीवेयर, मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में आप ड्रग दे सकते हैं, इसके अलावा आप जो है ओरल फॉर्म में या इसके जो है इम्प्लांट्स वगैरह जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं. पल्मोनरी है, इसके अलावा ट्रांसडर्मल है, ठीक है. नैनो पार्टिकल्स मुख्तलिफ किस्म के नैनो पार्टिकल्स है, जिस तरह वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जिस तरह मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स है, कुछ लिपिड बेस्ड है, ठीक है, और कुछ जो है पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स है और कुछ जो है बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल्स है. कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है नैनो डिवाइसेस के. सो द डेवलपमेंट ऑफ वन डोज a day ciprofloxacin using nanotechnology. तो वो फिर हम खैर आगे डिस्कस करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो बेसिक एप्लीकेशंस है, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ one dose a day ciprofloxacin using nanotechnology, tumor targeted Taxol delivery using nanoparticle and phase 2 clinical trial stage. मतलब टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है. अब नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है, कुछ मेरिट्स हैं. फॉर एग्जांपल लेट सपोज द डोजिंग फ्रीक्वेंसी विल बी रिड्यूस. फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ वन डोज एडेसिप्रोफ्लॉक्सासिन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्सोल ड्रग है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर जो है वो आप टारगेट कर सकते. ट्यूमर टारगेटेड टेक्सोल डिलीवरी यूजिंग नैनो पार्टिकल्स एंड phase 2 clinical trial stage. इसके अलावा improve the ophthalmic delivery formulations. You can also produce some ophthalmic preparation using the smart hydrogel nanoparticles. So hydrogels it can be also applied to the human body. Oral insulin formulation using nanoparticle carrier एंड लाइपोसोमल बेस्ड एम्फोटेरिसिन बी फार्मूले, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलेशन है वो अवेलेबल है जो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप इसको मतलब डिजाइन. प्रायोरिटी एरियाज क्या है? कैंसर नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा डायग्नोसिस यूजिंग क्वांटम डॉट्स है, ट्यूमर टारगेटेड डिलीवरी है, इमेजिंग है, कैंसर जीन थेरेपी है. So these are the different priority areas. Mean you can, for example, you can produce some anti-cancer drug with the help of nanotechnology, and you can produce some mean quantum dots and tumor targeted delivery. Uh, for example, a patient who is suffering from cancer or tumor, so you can target that tumor with the help of you can produce some new compounds, new drugs, that is called targeted drug delivery. तो मतलब एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स जो है उसको इसके लिए भी आप फार्मूलेशन कर सकते हैं इमेजिंग में, और इसके अलावा कैंसर जीन थेरापी में